Hello student, very good morning student. I am your science teacher and we are going to discuss chapter 13. In this chapter number 13 we will discuss about the topic sound. Okay, and in sound we will discuss about the topic sound is produced by vibration, sound propagation, characteristics of sound, how do we hear sound, audible and non-audible range, noise and music. These are the topics we are going to discuss in this chapter. Before going ahead, we have to discuss some of the we have to understand what is the sound. So what is sound? Sound is a form of energy produced by vibration. Sound is a form of energy produced by the vibrations. As you know that sound play an important role in our daily lives. It helps us to communicate with each other. We hear a wide variety of sound in our surroundings. Sound is produced by vibrating body. Vibration is to and fro or back and forth motion of an object. Okay, what is sound? What is vibration? Vibration is the to and fro or the back or the forth motion of the any object. टू एंड फ्रो मीन्स इधर और उधर, ये एक फ्रेज है. एंड बैक एंड फोर्थ मीन की आगे और पीछे. जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करता है, मोशन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं. Vibration object spreads the energy in all the directions in the form of sound. Okay, sound is a form of energy, as I told you right now, which is produced due to the vibrations and cause a hearing sensation in our ears. For example, if we strike a school bell, it vibrates and produce sound. Okay, if you pluck a stretched rubber band, okay, uh, if you pluck a stretched rubber band, it vibrates and produce sound. If you beat a drum, its stretched membrane vibrates and produce sound. So this sound here, the stretch rubber and stretch membrane of the drum and school bell vibrate and produce sound. Okay, so sound can be produced by vibrating the object or by producing the motion in the object. Let we understand it more. Here you can see so many of utensils are kept here, like the fry pan, a plate and a spoon, and so many type of bowls are putting here. And this, when we stuck these of the utensil with the help of the spoons, on striking with the spoon, these all the utensils produce different sounds. Okay, and striking the spoon on these utensils, these produce the different sound. Firstly, we understand that we will understand what happens to the object when it is struck. जब स्पून को हम किसी बर्तन से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग. उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. एंड ए डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड. एंड ए डिस्टर्बेंस, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. तो कैन यू सी द vibration produced in the utensils? No, we cannot see the utensils vibrating because vibration produce very fast. Okay, because vibration produce very fast, so we cannot see the utensils vibration. Okay, so here you can, here written is that let us check their vibration by performing simple activities. By this activity we can see the how the vibration is produced.
Okay, so let us discuss these activities. Here it is aim to prove that sound is produced as a result of vibration in the object. What are the materials that are required to do these activities? A few utensils from the kitchen, serving spoons, and small thermocol balls. Okay, these are the materials required to do these activities. What is the procedure? Methods: keep the utensils side by side on the table. Okay, we have to keep all the utensils that we have taken on the table and place a few thermocol balls in each of the utensils. Means we have to keep all utensils on the table, and some of the thermocol balls we have to keep on the each utensils. And now we have to strike the bowl with the serving spoon. What we will observe, we observe that all the thermocol balls showing any movement. Okay, means all the thermocol balls present in each utensils start vibrating and produce and started moving. Okay, why they are moving, why the thermocol balls are moving? Because they are producing vibration in the utensils by striking the spoons. Okay, here the conclusion is written that as the utensils are stuck by the spoon, we can hear the sound and see the thermocol balls vibrate. Okay, the thermocol balls vibrate because why the thermocol balls? Now the answer is vibrate because the utensil in which they are kept vibrate when struck with the spoon. As the vibration stops, the thermocol balls stop moving. This proves that when we strike an object, a vibration is caused due to which sound is produced. Means जब हमने थर्माकोल्स को यूटेंसिल्स में रखा और स्पून के हेल्प से उसको स्ट्राइक किया, तो स्पून के स्ट्राइक करने से बॉल्स उन यूटेंसिल्स में क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है, और उन वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने से उसमें रखे हुए थर्माकोल्स बॉल्स क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, ठीक ना। एंड जिससे ये सिद्ध होता है कि जब हम स्पून से किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये पहली एक्टिविटी जो हमने अभी देखा, इससे की मदद से यही शो किया गया है कि वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक, लेट्स डू another activity in which we can hear sound and see the vibration. In activity 13.2, we have to show that to see the vibration and hear the sound. For these activities, we have to need the material, a metallic box and 5 rubber bands. Okay, these are the materials. Materials are metallic box and 5 rubber bands. Procedure means method क्या है? Wind the box with the rubber bands and shown in the figure. मीन्स हमें क्या करना है? सारे मेटालिक बॉक्स को रबर बैंड की हेल्प से क्या करना है? वाइंड कर देना है, लपेट देना है। इन सभी रबर बैंड को हमें ऑल मेटल बॉक्स पे क्या करना है? लपेट देना है, और फिर प्लग द रबर बैंड एट डिफरेंट प्लेसेस। और जो रबर बैंड हमने इस पर क्या किया? प्लेस किया हुआ है और वाइंड किया हुआ है, उसको हमें प्लग करना है। प्लग करना मीन्स वी हैव टू उसको स्ट्रेच देम एंड देन वी हैव टू लीव इट। Observation, what we see, can you see the rubber band vibrating? Is the vibration different when you plugged it at different points? Okay, so here we can see that rubber band vibrating and hear the sound produced as we see the vibration. When we plug the string at different points, जब हम जो रबर बैंड हमने इस पर वाइंड कर रखा है मेटालिक बॉक्स पे, जब इसको हम स्ट्राइक करते हैं या इसको हम प्लग करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट प्रकार के साउंड हमें वहाँ पे सुनाई देते हैं, ठीक ना। द सेम वे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वर्क, इसी प्रकार से जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं,
तो उनको जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो वे होता है वो सेम वे होता है, ठीक ना। वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग लगे हुए स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं, और प्लग करने से डिफरेंट प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। So today we had discussed the topic about the sound, and the next day we will discuss about more about these topics. For today, this is the enough. You have to well studies and make a concept clear by studying this chapter. Thank you all.